आज स्टॉक सिलेक्शन सीखेंगे कहाँ पर बड़े लोग, व्हाट आई मीन बाय बड़े लोग, इंस्टीट्यूशंस. व्हाई आई एम फोकसिंग ऑन इंस्टीट्यूशनल ट्रेड. उनके पास रिसोर्सेस बहुत सारे हैं, उनके पास टेक्नोलॉजी है, उनके पास बहुत क्वालिफाइड टीम मेंबर्स हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से पढ़ के आते हैं, काफी एक्सपीरियंस होते हैं. वो ज्यादातर टाइम उनका ट्रेड सही. अब 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 ये लगे ठीक उनका ट्रेड सही होता है, पता कैसे चले उनका ट्रेड कहाँ है. तो हम आज वो ही सीखेंगे कि इंस्टीट्यूशंस के या मोर देन नॉर्मल सौदे कहाँ लग रहे हैं. आप एक चीज देखे होगे, सुने भी होगे या एक्सपीरियंस भी किए होगे. लोग ऐसे बोलते हैं कि पहले बड़े सौदे खड़े होते हैं फिर वहां भागता है. तो वो जब सौदे खड़े हो रहे हैं उस स्टेज पे हम जानेंगे कहाँ पर खड़े हो रहे हैं. ठीक है. तो इस पूरे बाजार में आप फंडामेंटल तरीके से स्टॉक सिलेक्ट करो, टेक्निकल तरीके से करो, क्वांटिटेटिव करो, जो भी मेथड आपका हो सकता है, टोलबाजी से करो. आपके पास सौदे लगाने के 3 ही तरीके, या तो आप फ्यूचर में ट्रेड करो, या ऑप्शन में करो, या कैश मार्केट. देयर इज नो फोर्थ वे. नाउ आइडियली इजीएस्ट कहाँ है, आप तीनों तरीकों पे एक स्टैंडर्ड लगा दो, एक रडार लगा दो, ऐसे बोलते हैं. और किसी भी एक वर्टिकल में स्टॉक या फ्यूचर या ऑप्शन मोर देन नॉर्मल एक्टिविटी हो रहा है, तो आप बोलो ये इट इज मोर देन नॉर्मल एंड इट अपीयर्स टू बी एन इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी, बिकॉज इंस्टीट्यूशन 2 लॉट 4 लॉट 5 लॉट काम नहीं करते, वो बड़ा काम करते हैं. तो यहाँ पर क्या है हमारा आउटलायर स्कैन लगाना. आउटलायर पे स्कैन लगाने का मतलब ऐसा नहीं कि कोई वेबसाइट पे जाए और हमने स्कैन लगा दिया कि ओआई बेस्ड. ठीक है, ओआई बेस्ड ट्रेड तो निकलते हैं, पर उसके अपने चैलेंजेस हैं. तो आज हम लोग वो सीखेंगे. अगर एक इंस्टीट्यूशन और या एक बड़ा पोजीशन बाजार में खड़ा हो रहा है यूजिंग द ऑप्शन रूट, and I'm repeating it, it's not the stock route or like normal cash market route or future. This time somebody has created a position using the option route. अब आते हैं ऑप्शन रूट में क्या क्या तरीके. तो मान लो मैं बहुत बुलिश हूँ स्टॉक, या तो मैं पुट बेच सकता हूँ या कॉल खरीद सकता हूँ. ठीक है, अपने को सिर्फ 2 ही चीज पता करना है. क्या एक कहाँ पर बड़े सौदे लग रहे हैं ऑप्शन के यूनिवर्स में, और दूसरा वो सौदे बाइंग नहीं है सही है. तो इस पूरे को हम 2 नाम दे देते हैं, डिटेक्ट एंड डिकोड. डिटेक्ट कर लो कहाँ पर मोर देन नॉर्मल है, और डिकोड कर लो ये बाइंग है सेलिंग है ऑप्शन. ठीक है, अब रहा कि देखो ऑप्शन में कैसे डिटेक्ट करेंगे. तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा डेटा लगाता हूँ, क्योंकि मैं पूरे दिन प्रेजेंटेशन दिखा सकता हूँ और आपको कुछ समझ में ना आए, और डेटा स्क्रीन लाता हूँ. मैं क्या डेटा लाता हूँ स्क्रीन पे, क्या डेटा लाता हूँ. कल फ्राइडे जब बाजार हो रहा था तो ऑप्शन के बाजार में क्या चल रहा है. ठीक है, अलाउ मी अ मिनट, आई विल. तो मैं कुछ डेटा जनरेट कर रहा हूँ, और तो मेरे पास पुराना डेटा भी पूरा बट और ये तो ऐसा फाइल है. देखो ये कल का कल जब बाजार बंद हुआ 28 तारीख को तब का डेटा है. ठीक है, और मेरे सबसे भी इसमें हमने क्या किया है कि जैसे हमने कहा कि बाजार में 3 तरीके हैं एक सौदे को खड़ा करने का. तो हमने उन 3 में से 2 को इस फाइल पे लगा लिया. क्या लगा लिया है, फ्यूचर का, अगर कुछ फ्यूचर में सौदे हो रहे हैं तो वो पता चले. ठीक है, ऑप्शन का. ठीक है, ऑप्शन के डेटा में हमें थोड़ा सा ट्विकिंग करेंगे, वो आने वाले मिनटों में बात करेंगे. तो पहले देखते हैं फ्यूचर का डेटा क्या लगाया है. तो हमने सारे स्टॉक्स ले लिए हैं, जितने स्टॉक्स हैं F&O के यूनिवर्स में, से अबाउट 184 ठीक है. वन डेटा वी हैव केप्ट, इसका करंट ओपन इंटरेस्ट कितना है. नाउ ओपन इंटरेस्ट डज नॉट मीन कि सारे के सारे जैसे इसमें 69,720 सारे लॉन्ग है या सारे शॉर्ट. These are current position which are yet to be closed.
ठीक है, आप सबको ओपन इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट पता होगा, अगर नहीं है तो थोड़े आप मुझे पूछ भी सकते हैं, और यार यूट्यूब पे बहुत सारे हैं। तो बेसिकली ओपन इंटरेस्ट मतलब है एज ऑन नाउ कितने सौदे खड़े हैं, ठीक है, आई एम रिपीटिंग इट, सी इन कैश मार्केट you don't have a limitation to close a trade say by a given date, but in F&O market you have to close every trade by expiry, right? So all the trades which are currently not closed are part of the open interest calculus. There are some more calculation, like only the one which trade to like a new buyer to new seller, but then to make it easy for our viewers, listeners, अगर मैं 69,720 ओपन इंटरेस्ट है, तो व्हाट इट मींस इस स्टॉक में अबाउट इंडिया में currently 69,000 shares are the first leg is created yet to be closed before that's fine. Now that is not our focus area. Why that is not our focus area? See, we are in July month. We can, I mean, even today I can trade a August expiry. I mean, of course, we are taking August, so September or October expiry. When I say this 69,000, so these August expiry was available to trade in June month also, April month also. And remember, this market runs on the current sentiment. 2 week पहले क्या हुआ था, nobody cares. वो ये 69 में there are data which was added long back, 2 months or 3 months back. So that's not the right reflection of what is happening. Now, what is happening today is the next call out. Okay? So, today in the stock, 2480, new contract at share got added. Now, एक चीज बहुत important है. I've seen many videos, websites of publishing open interest data on percentage change. Okay? Now, even if you see, no, why I'm highlighting this fact percentage change. अगर आप देखो तो ये सिर्फ, so when I convert the overall open interest into number of lots, it is 62 lots. That's all. Now 62 lot is not something I would say ये institutional activity. ये बहुत nominal है. अगर आप मुंबई में रहते हो तो एक छोटा सा ऑफिस गोरेगांव का अभी 50-60 लॉट काम करता है. ठीक है. So yeah, I mean, just an example going on. It happens every city in India. 50 lot का काम तो होता ही है. 50 lot is not a big thing. So what we have done differently, we have extrapolated the open interest in terms of lots. So now let me show you an example. HDFC Bank, this is latest data. 9,300 lot. Now 9,000 is it too big, too small? ये आप हिस्टोरिकल रेफरेंस से ले सकते हो. ठीक है. मुझे अगर आप पूछो रिलायंस में, एचडीएफसी में, या कोटक, सन फार्मा, any given day they don't do more than 4-5. I mean, Reliance and all do more than 1,000 lots, but then this Sun Pharma, Bandhan Bank, NTVs, they don't do more than 200-300 lots. Okay. So every day you do 400 lots. Today you have done 4,000 lots. So there is something considerably big happening in the counter. Right. Now, F&O आपको पता है, जब बहुत लोग ट्रेड करने आते हैं. अगर if you remember ITC 2 years back, कोई ट्रेड करता नहीं था. ठीक, तो F&O में भाव आता है जब बहुत लोग आएंगे, डिमांड सप्लाई का मैकेनिज्म फ्री एक्टिविटी. So I know one thing, NTPC every day does a 200 lot of trade. How come today 4,000 lot? Something is happening in this counter. I should focus into that. Okay? But then since today we are talking about the option methodology, so what we will do, we currently keep the option data, future data into the height कर देते हैं, option से बात. So we have done the similar thing on the option. Put का data हमने बनाया. Now what you may be wondering here, बहुत सारे स्ट्राइक होते हैं. If I have to go to if I have to go to option chain, there are many strikes, right? Strike, many strikes. तो इसमें से कौन सा स्ट्राइक लेना है, कौन सा नहीं लेना है? Idea is very simple. You have to add all the combined open interest. और ये 1 month का 3 महीने का. Okay, ठीक है. तो what we have done, put together the entire
HDFC बैंक का put. You play with HDFC bank here. So all the puts we have taken, like, so this is in terms of lot. So, and this is in terms of share, like, money by the lot. Now, this is current month. Next month also we have taken, and then further month. If you see entire option chain across the strikes, we have this much of put open interest. Again, I said कि पहले क्या हुआ does not matter. I'm only worried about today. तो भैया आज तो इसमें unwinding हुई, ठीक है? And then reference 1629100. We have no idea कितना ज़्यादा है कितना कम है. So let me do it in terms of lots. 2952 lots का unwinding. Now see, a put unwinding, if you extrapolate that, so suppose, assume, I'm not telling in this case, but assume if there were put sellers, now they feel the market will, or this stock will fall. So what is the first fear they will have? अगर अभी जो 10 रुपए का पुट है वो 50 हो जाएगा, बिल्कुल, तो वो अभी क्लोज करना चालू कर रहा है, right? So this is the first indication. It appears to be a bearish sign. But then we will not be just looking at one side. We will look at the other side as well. ठीक है? We will look at the other side as well. Yeah. So इस केस में कॉल पुट दोनों का अनवाइंडिंग हो रहा है. This is not an information which I can make any use. But if you want me to say show you some information, look at this. Bajaj Finserv or any other stock that we were. Look at this. M&M. So if I add the across the strikes, it is 1900 lot of activity yesterday. 1900 के सामने 4500 लॉट का कॉल एक्टिविटी. तो आइडियली किसी एक के सामने दो का एक्टिविटी है, ठीक है? मार्केट में एक पुट का काम हुआ है, सामने दो कॉल का काम हुआ है. नाउ हमें इससे ये पता करना है कि ये पुट की बाइंग है या पुट की सेलिंग है, कॉल की बाइंग है या कॉल की सेलिंग है, बिल्कुल, ठीक है? अगर हमने ये कर लिया तो वी नो कि एक सब अज्यूम, अभी वी विल डिस्कस की बाइंग है सेलिंग है, बट अगर हमने ये कर लिया कि ये पुट की बाइंग है, तो ऑब्वियसली कल का भी होगा, तो ये पुट के सामने लोग दो कॉल खरीद रहे हैं, इट्स अ वेरी साइन, इट्स अ वेरी, सॉरी बुलिश. अगर लोग कॉल बेच रहे हैं, ऑप्शन बेच रहे हैं, तो एक पुट के सामने दो कॉल बेच रहे हैं, तो बेरिश साइन. अपने को सिर्फ यही करना है. बट हैविंग सेड दैट, थोड़ा सा और फिल्टर है, एक चीज समझना कि सर ये ज़्यादा जरूरी है. आई शुड हैव सेड दिस इन द बिगिनिंग. आप किसी भी मेथड से ट्रेड करो, आप टेक्निकल एनालिसिस करो, फंडामेंटल्स करो, क्वांटिटेटिव एनालिसिस करो, आपको दोनों ट्रेड मिलते हैं, बुलिश भी मिलते हैं, बेरिश भी मिलते हैं. हम क्या करते हैं, या बहुत बार मैंने पहले भी किया था अपने शुरुआती दिनों में, कि एक बुलिश मार्केट में बेरिश ट्रेड होगी और हम वी गो अगेंस्ट, लेकिन निफ्टी लोग 20,000 पा गया तो गिरना है, यहाँ से बेरिश ट्रेड. बट देन दैट इज going against the wind. तो अपने को पता होना है कि मार्केट कौन सा ट्रेड में है, कौन सा डायरेक्शन में है, और आवर ट्रेड शुड बी इन लाइन विद द मार्केट डायरेक्शन, ठीक है? तो अगर मार्केट होल्ड ट्रेंड में है, लेट decode if it is an option selling, it appears to be an bearish trade. तो decode कैसे करेंगे? तो decode करने के सबसे पहले चीज समझना, आप सब कहीं ना कहीं सुने होंगे कि ऑप्शन चेन को आप सेलर पर्सपेक्टिव से देखो, बायर पर्सपेक्टिव से मत देखो. और टेल मी समथिंग. अभी गया मैंने एक अदानी के स्टॉक में काफी कहीं उधर आप क्या हिम्मत जुटा पाते ऑप्शन बेचने का? बिल्कुल नहीं. कुछ तो इंडिकेटर होता है जो हमें बताया कि स्टॉक में उथल पुथल है या उथल पुथल आने वाला है. तो देखो, IV इज वन सच थिंग, टेल्स यू द रिस्ट्रिक्टेड वोलेटिलिटी, ठीक है? अब ये भी एक प्रॉब्लम है कि IV का कुछ स्टॉक में IV 11 होता है, किसी में 25 होता है, किसी में 100 होता है. सो एट व्हाट लेवल आई विल से दिस इज एन एलिवेटेड IV. सो मैं इफ आई एम एन ऑप्शन सेलर ना,
The higher is the IV, the higher is the anticipated volatility. And an option seller don't like to be in a stock where there is a volatility. वो तो मेरे लिए प्रॉब्लम है, मैं जानबूझ के प्रॉब्लम में नहीं पड़ने वाला, ठीक है? तो मैं कभी ऑप्शन बेचता हूँ जब मुझे लेस वोलेटिलिटी दिख रहा हो. तो अब वोलेटिलिटी का मीटर क्या है, बेस क्या है? आईवी कैसे गेज करेंगे? अभी देयर कैन बी सिचुएशन वेयर 100 का आईवी भी कम है और 10 का आईवी भी ज्यादा है. देखो, आईवी को आप आईवी परसेंटाइज से गेज कर लो वोलेटिलिटी. तो मैं एक एग्जांपल दिखा देता हूँ. Second. Okay. So currently I'm using I remove the price IVR. Look at this Mahindra and Mahindra. So just in a day, I mean, it was really, look at this IV jump, IV percentage jump. So इसके दो इंडिकेटर है. Out of nowhere, you see a IP has jumped say from 20% to 60%, 70% in less than 2-3 days. So इसका mechanism कैसा है ना? The more you do an OTM bidding, the higher it goes. तो लोग बहुत तेजी में IV ऑप्शन बाई करने लगते हैं मार्केट प्राइस पे, फिर ये आपको बढ़ता दिखेगा. तो क्या है, बहुत तेजी से IP परसेंटेज बढ़ रहा है, तो there are fair chances that option buying है. और IP परसेंटेज 100 के आसपास है. Like 99, 98, 97. That indicating the volatility is expected to be highest of the last 1 year. Like this is the 1 year. अगर कोई चीज में पिछले 1 साल में सबसे अधिक वोलेटिलिटी की उम्मीद है तो ऑप्शन बेचता नहीं है. आप बताओ, ऑप्शन अगर ऑप्शन में काम हो रहा है तो क्या काम हो रहा है? बाइंग गेन होगा. फिर इतने तेजी वाली बढ़ रहा तो वो एक इंडिकेटर, कोई जब वोलेटिलिटी बढ़ने को मिले तो ऑप्शन को नहीं बेचता. इतना तेजी बढ़ रहा है और काम भी हो रहा है, क्या हो रहा है नहीं है. अब ये अपने को देखना है ना कि इस तरह देखना है कि हमने जो डेटा निकाला था ऑप्शन का एग्रीगेटेड लेवल, आई एम रिपीटिंग एग्रीगेटेड लेवल, वो बाइंग है ऐसे नहीं. इट इज शोइंग वन मोर थिंग. एनटीपीसी पुट में देखो 200 रेट कम हुआ है, कॉल में 2200 अनवाइड हुआ है. अगर ऑप्शन सेलर को प्राइस ऊपर जाने का analysis, like if they have their analysis of they see a possibility the price goes up, they will be the first person to close their short option trades. तो हमने क्या किया, हमने सिर्फ डिटेक्ट किया कल जब बाजार चल रहा था तो क्या हुआ. हमारा डिटेक्शन में क्या आया कि भैया देखो लोगों ने, और देखो 2200 लॉट्स के ट्रेड क्लोज हो गए हैं. 2200 lot of trade got closed yesterday. Now if this was option selling or buying. If these were option selling, then options, if a call seller is closing their bullish side, means there is a bullish sign. Plus the second signal, somebody is selling put. So you have a double signal there, right? Now this is little surprise to me that on the first day of the series in which people are unwinding it, was announced. So when we have a result, then we see a lot of unwinding. But what I have seen, whenever there is a both side of the unwinding, there is a huge volatility in the stock. If you ask me personally, I would be very keenly monitoring Bajaj Finance because I could see like 3,600 lot, and understand one thing. For 1 lakh option selling, it could cost you somewhere between 1.5 lakh to 2 lakh rupees. Right now, 3,600 lot. Assume the amount of money was riding here has gone out. Kitna money is in the game? I mean, see, this is another stock. This is a bank. ICICI. So, idea is to find the stock which has a cleaner data. If you ask me what is cleaner data, I would say M&M. Like, दो के सामने एक, right? ठीक है? I would not say, let's see. I would not say this is the clean data because ONGC or IEX, 1,000 lot and 600 lot, because assume that it is selling. So
The bulls are selling puts and the bears are selling calls. So there is a lot of volatility. Achha, one more thing, and that's more of a disclosure. See, this is the first day of the series. We don't have, I mean, the baseline from where we're telling you, कल के compare में आज 3,000 got close by. Study the series has won by force close lot of positions. So baseline was anyway less. ठीक है? ये सेशन अगर मंडे ट्यूसडे हो तो ज़्यादा एग्जाम्पल्स होता है हमारे पास दिखाने के, बट ठीक है, अभी भी हमने को मेथड समझना है, एग्जाम्पल एक्चुअली स्टॉक वाइज नहीं देखना है, ठीक है? तो अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल दिखाता हूँ. लेट्स सी व्हिच इज द हाईएस्ट अनवाइंडिंग इन द पोस्ट. Oman, Infosys, Infosys. I'm looking for someone where so it is so unwinding because the previous day was a holiday, right? Not holiday, expiry day. Had that not been the expiry day, though, we both cleaned it out. I can make a fee, I think, contrast. Look at this, no? So let's contrast. That's the right word to use. Yeah. Now this is much cleaner. 1800 is to 3 is to 1. Hey, there is 471 to 7,000. Wow, that is a good peak. I mean, you're what like. So if this is call side, if call sellers are sending call, put sellers are not even buying their hand. The call gon besta where besta. If call buyers are buying calls, then put buyers are not even trying their hand. So we have a clean data. Okay, all we have to do decode it. No, I'm not going to show you because there's a lot of references will come into the gray. But then I brought it to the point where you can make it easily for you, right? Okay. So now you got to go look at this. Okay, so what I thought. Now you can't get an easy, example than this. So idea is to summarize the whole option chain. Focus should be on the change of the option, not on the overall opening. But change is something which is latest. And if you ask me, Lawrence McNeil की Lawrence on the options, उन्होंने put call ratio के बारे में भी लिखा था. Put call ratio is nothing but the total number of put divided by the total call traded on the same day. So if at all say this is nothing but we are doing kind of total call today divided by the number of call to the same, and this is a very outrageous ratio. Right? So this detection is done for this case. Right. All you have to do is decode. हम decode कैसे करोगे? Okay, बहुत simple है. Every percentile is. So we could do it, but then I don't know how much reversal will come into the So let's just use IV percentile and then you know. But remember one thing. This is the first step where you filtered out to the stock. So I always say like this. When I go to the bank, suppose I have to deposit money. So I उसको 10,000 रुपए दिए. Counter clerk ने infantry. And I immediately don't get the SMS that money is credited. He gives the document back to someone, and then that person does the rest of the, and then the money comes. So like what they call in the banking language, the maker is the checker. This would be your maker. So ऐसा कर सकते हैं. हमने इसका तो देख लिया. So out of 184 stock, we now zero on the one transferring the option data. ऐसा करते हैं, डिकोड करने के लिए हम किसी और स्टॉक का अज्यूम कर लेते हैं कि वैसा दिख रहा है. तो हम लोग कुछ एक्चुअल स्टॉक की बात भी नहीं करेंगे लाइव मार्केट में, और समझ भी लेंगे. हाँ, चार्ट किसी और का ही खोल लेते हैं, सिप्ला कर देते हैं, सिप्ला ना, जिसमें कि डेटा कंफ्यूज. यार वो बड़ा मुश्किल काम है. Look at Sipla ka jump. This is an option buying. I mean, from almost to the Sipla में option buying. क्या ratio? Size to 5. Now this is yesterday's data. Okay. कल चालू हो जाएगा हुआ है तो अब when it has reached to a point, something is happening to the put side here. Okay. 93. Oh no. Yes, कल crash. ये पहले buying हुआ था. It was at 94. Yesterday it crashed to like somewhere 47. So yeah. So not
नॉट इन माइंड. सो कल जो है लोगों ने भर भर के पुट बेच दिया. ठीक है. देखिए 97 you don't dare to sell call or put. So वहां पर अगर ये होता तो मैं बाइंग बोलता. But yesterday people have sold put. Right. Okay. So you get 46. Listen, this is level. I won't dare. I won't fear to sell option. I must around. I would have been. So if दो दिन पहले, 26 like 3 days back, मैं ऑप्शन नहीं बेचता. बट yesterday रेंज में हाँ वो मेरे लिए कंफर्ट बनता नहीं, बहुत बड़ा रेंज नहीं इसके में. अब वुड हैव सोल्ड आराम से. कल जब बाजार चल रहा था तो लोगों ने ये कैसे बोलते ना कि कोई ट्रकलोड ऑप्शन बेचा है. राइट. 5,000 लॉट के पुट बेचो आप, सामने में 3,000 लॉट कॉल, तो ये काफी नियरली डबल है. तो इससे बुलिश था. So if you go back and see what happened to the option price, stock price. ठीक है. तो और देख लेंगे एकदम पर मुश्किल तथा कंज्यूमर्स भी काफी क्रैश हुआ. कल सेलिंग आपसे. मतलब देखो ये बहुत ज्यादा अंदर नहीं है. मैंने बोथ सा ट्राइंग देयर हैंड्स ऑन छोटा ही बोथ आर ट्राइंग देयर हैंड्स एंड बीएस आल्सो ट्राइंग, दे आर नॉट वेरी फार, है ना. तो दोनों हाथ मार है. बट वो आउटरेजियस रेशियो जिस टेके में था वो नहीं. Like we need that kind of data, one TKM type of data. We don't need this kind of data. Right. So again, so let me do this. Detect the anomalies. This is the beginning. Right. है ना. Decode it. Right. सारे ratios are not tradable. The one which is really outrageous, right, are tradable. So TKM out of all D4 is the one I would be more than happy to take it. If you say there are people I know that are really great with the charts. They can tell you this is a level, this is a level, but then what is one thing I see? Which chart पे plotted उनको बहुत challenge है. न्यूज़ से उठाते हैं, यहाँ में उठाते हैं. So now this will make their work easy, right? कि कहाँ चल रहा है, ब्रॉडर स्टोरी क्या, बिगर पिक्चर क्या. तो कहाँ पर हिजिस के एक्टिविटी 7,000 लॉट, 7,000 लॉट. Do you think I can do 7 lots? I mean, of course it is and do 70 lots, but then 7,000 lots, even if it is like 1 lakh rupees for a lot amounts of selling, I mean it's a lot of money. Get good. तो ये तो institutional activity. Something that is not easy, right? So sitting in your home watching this YouTube video, you have learned the method where you can sit at your office or home and then copy the brain of someone creating a trade, from a big school. I remember मैं जब नया स्टॉक मार्केट में आया था, मानवेंद्र सर जो हम लोगों के फाउंडर है, उनसे मेरी बात हुई थी. वो क्या करते थे कि रिटेलर्स को ना जैसे बड़ी मछली होती है उसके आसपास छोटी मछलियां घूमती हैं, कि बड़ी मछली जो खा रही है उसका थोड़ा थोड़ा इधर उधर गिरेगा मुंह से और वो छोटी मछलियां खा लेंगी. तो हम रिटेलर्स वही हैं. हाँ. अच्छा तो सी मैं इस HSI में ऑफिस में बैठ के किसी ने 7,000 लॉट का सौदा लगाया है, उन्हें पता कर बिल्कुल वो to decide they have to do this 7,000 lot of trades, they would have done a lot of research. And to that research, they would have gone to, a lot of meetings and then discussions and all. But then after end up, everything they created a position and then we use the method where we know what is happening. ठीक है. यहाँ पर 2-3 चीजों का ध्यान रखना है. छुट्टी, अजीम मंडे को एक छुट्टी है और ऐसे ही रेशियो दिख रहे हैं मुझे 1:2, 1:3. नाउ उस समय में हमें जाके पर देखना होता है कि ये 7,000 लॉट एट द मनी है, फार आउट ऑफ द मनी. व्हाई आई एम टेलिंग फार आउट ऑफ द मनी, वी हैव टू इग्नोर. तो छुट्टी में ऑप्शन का थ्योरेटिक्स होता है. सो अगर मान लो इसका क्या प्राइस है 1,091. I know Monday market is closed. There's a decay for that one day. Saturday, Sunday, and Monday. There are 3 days of decay. Assume the decay is of 4 rupees or 5 rupees. What I have seen, I've noted, these at 1,091. People would have gone and sold, 1,300, 1,400 call. So even they have sold far call because they wanted to eat, or rather in a very, kuch line words na. They wanted to meet the premium for that 2 days or 3 days. उन्होंने बहुत दूर का बेच दिया.
तो वो अभी भी इस नंबर पे आएगा, लाइक 7,000 में वो दैट काइंड इज स्टिल देयर, बट देन आई वोंट से कि एन इंस्टीट्यूशन हैज क्रिएटेड अ बुलिश पोजीशन और बेरिश पोजीशन। आई वुड से कोई किसी को चवन्नी अठन्नी का ऑप्शन ठेटा खाना था, वो उसने सौदा खड़ा किया है। तो इसमें दोबारा से इसको रिफिल करते हैं, अपने होल डिस्कशन को डिटेक्ट करेंगे, डिकोड करेंगे और थोड़ा प्रोब करेंगे कि वो जो एक्टिविटी है इज इट टू क्रिएट अ बुलिश और बेरिश पोजीशन और इज इट टू ईट प्रीमियम टुवर्ड्स द एक्सपायरी। अगर मान लो 2 दिन में एक्सपायरी है, आज 1,000 रुपए का 1091 इज द प्राइस, 1300 1250 का प्राइस इज ऑप्शन पे 2 रुपए 3 रुपए 4 रुपए रहते हैं। 2 दिनों में highly unlikely that you reach 15% move, right? There's no event or no news, so people do sell that. So you have to be mindful of that also कि ये activity कहाँ हो रहा है। So it is always good then if you figure out if this activity is concentrated in and around ATM. ठीक है? Now let me tell you this tip class. अभी हम लोगों ने चार्ट देखा था ना, बहुत तेजी में इसका भाव आता था भाई। Now ये इम्पोर्टेंट है, ये प्राइस कुछ काफी तेजी में भाग रहा है, ठीक है? एक मिनट यहाँ हटा दे सकता। Ignore the wall. इतना छाप कर सकते हैं। ओके, सो एक चीज क्या जरूरी है, एटीएम किसको बोलते हैं? सपोज ये स्टॉक 3% मूव कर गया हो, अजीन इसके ऑप्शन चेन में आप जाओ, अगर मान लो काफी प्रॉब्लम, मान लो कौन से स्टॉक को बड़ा मूव आया था कल? तो सर सारे ही मतलब धड़ाधड़ी चल रहे थे। आई थिंक इन्फी था जो नहीं गिरा था। So assume Infi started the day at 1870, ठीक है, and close at 1370 में स्टार्ट 90 में स्टार्ट हुआ है और 1340 में क्लोज हुआ है, और मुझे Infi में 500 लॉट 600 लॉट पे काम दिख रहा है। तो अब हमने क्या किया कि हमारे को देखना है कि ये इट शुड बी कंसंट्रेटेड अराउंड एटीएम। तो एटीएम इसका तो ये होगा, आपको यहाँ दिख नहीं रहा है, पर द पॉइंट हियर आई एम ट्राइंग टू रेज कि देखो जब वो बाजार खुला था 100 देश नहीं आ रहे, उसमें तो 1390 का एटीएम था ना। तो अगर आपको यहाँ पर अगर एटीएम में ओवाई का एडिशन दिख रहा है, दिस एडिशन इज नॉट दैट समवन इज सेलिंग टू ईट द प्रीमियम, दिस एडिशन बिकॉज़ समवन क्रिएटेड अ पोजीशन टू ब्रिंग इट, लाइक दे हैड अ बेरिश व्यू। तो एटीएम पे जो आप जो एटीएम पर बोलो ये एटीएम मेरा, इट इज ऑन द ओपन। कहाँ बंद हुआ वो एटीएम नहीं बोलेंगे। सर अभी से इनकी सपोज करो 1385 ओपन होता था, 90 वुड हैव बीन एटीएम और क्लोज एट 1340। सो व्हेन आई से 6000 लॉट ऑफ ट्रेड, सो यू मे बी लुकिंग एट दिस एरिया। मैं बताऊँ वो नहीं, आपको देखना है जब वो ओपन हुआ उसमें एटीएम कहाँ था, क्योंकि 100 तो उसमें चालू हो गए। एनडीएफसी में शायद अच्छा मूव ये चीज दिखाई दे, कल एचडीएफसी का पूरा ड्रैग किया था उसने ना। एचडीएफसी बैंक अब तो इनसे हटा ही दिया ना। Okay, so the NTPC तो अपने के नाम है, right? So NTPC currently 3% ऊपर है, तो 6 रुपए, about 606 rupees, right? ये कल जब खुला था ना 204 के आसपास का एटीएम रहेगा, ठीक है। तो अगर मैं एनटीपीसी के पुट में मुझे 2000 लॉट देगा, तो मैं इसके यहाँ पर एटीएम, इसको एटीएम मानूंगा कि ये ओपन यहाँ हुआ था ना 2000 स्टार पे। आई विल नॉट लुक फॉर द पुट एटीएम हियर, बिकॉज़ सी दो चीजों का ध्यान रखना है। बड़ा काम हो रहा है तो पता करना है ये कोई 54-58 का ऑप्शन सेलर तो नहीं है, उसका क्या निशानी, वो फार ओटीएम में कार्ड नहीं आया। बट देन रिमेंबर, अगर आप अभी देखो तो ये 204 is the far OTM, looking far OTM, but remember it opened there only, it was an ATM that time. So we have to look for those numbers around ATM, and ATM blindly closing level ले लेंगे हम ATM को जहाँ ओपन हुआ उसके आसपास से चलता है। बिल्कुल ठीक है, अंडरस्टूड। ओके, तो फिर इस डिस्कशन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। डिटेक्ट करेंगे, कैसे डिटेक्ट करेंगे, सारे ऑप्शन चेन को जोड़ देंगे,
उसके चेंज पे फोकस करेंगे. चेंज हैज टू बी इन टर्म्स ऑफ लॉट नॉट परसेंटेज. लॉट में भी हमें अगर दोनों ऑप्शन कॉल और पुट में इक्वल लॉट है तो वो ज्यादा काम का इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि ऐसा समझते हैं इसको बायर बुल्स जो है कॉल पे फोकस कर रहा है, बेयर्स जो है पुट फोकस कर रहा है और वाइस वर्सा. तो हमें चाहिए एक सीवियर इम्बैलेंस इन द रेशियो. लाइक एक और 10 स्लॉट का काम हो रहा है दूसरे और एक स्लॉट नहीं काम हो रहा, तो बोलेंगे एक और ज्यादा काम हो रहा है. तो डिटेक्शन इज दैट वे. ये वो डिटेक्ट द एनोमली इनटू द ऑप्शन एक्टिविटी. डिकोड करना है. Decode karna is the buying or selling. That's easy. Once you've decoded, the third stage is whether it is a selling, is it in or around the ATM? Because if somebody has a view like bullets of there is view. When he is creating a position, he will create position in or around it. He will not create position far out. So वो पता करेंगे कि भाई ये जो एक्टिविटी कहाँ हुआ है. तो जब हम वो एक्टिविटी देखने जाएंगे तो एटीएम का सिलेक्शन शुड नॉट बी फ्रॉम द क्लोजिंग लेवल टू द ओपनिंग. Right. Okay. Okay. Now detect, decode, and little bit say it's pro. Pro. Okay. Now, ये कब काम करता है? Does not work first few days of the expiry. Like कल expiry शुरू था पहला दिन, तो क्योंकि कल तो भी जस्ट ऑर्डर लगे जाते, 2-3 दिन के बाद एक मंडे ट्यूसडे से ये डेटा काम का है. लास्ट के 3 दिन इसमें तो सारे उस मॉर्निंग. ठीक है, बिल्कुल. तो ये था आज का मेथड, डिटेक्ट, डिकोड एंड द थ्रो. बिल्कुल. तो सर कुछ मेरे को कुछ एक डाउट्स हैं. हाँ, तो पहला तो ये सर, इस तरीके से हम लोगों को जैसे हम ये चेक करते हैं, तो ये पोजीशन जब बनाएंगे हम, तो ये कितने पीरियड तक के लिए, और इसको हम लोग सक्सेसफुल बैलेंसिंग इसमें आपने क्या देखा है, ये स्पेशल एक्टिविटी है, ओवरनाइट इमीडिएट नहीं करता है. तो जैसे आज ये एक्टिविटी दिख रहा था, प्राइसेस अब ये 3 से 4 दिनों में रिफ्लेक्शन. ओके. सो लेट्स से आईटीसी में मेरे को आज एक दिखा कि हाँ भाई आईटीसी ने मेरे को लॉन्ग ट्रेड लेट्स से दिखाई दिया. इट इज नॉट एन इंट्राडे कल सुबह ट्रेड. हाँ, तो यू हैव डिटेक्टेड हाउस एक्टिविटी. राइट. अभी हाउस तो इंट्राडे के लिए नहीं आते. हाँ, वो तो थोड़ा वो आएंगे फिर. तो प्राइस में और रिफ्लेक्शन 3-4 दिनों के अंदर दिखता है. ओके. तो अपने को क्या करना है, इस दौरान अपना रिस्क एपेटाइट के हिसाब से स्टॉप लॉस रखना है. ठीक है. राइट. और अगर आपके पास चेकर रूल है, जैसे ये मेकर रूल बन गया, आपके पास चेकर रूल है, चार्ट पर चेक करना है, चेक कर लो अपने हिसाब से स्टॉप. Right. Perfect. And then अच्छा सर कुछ एक जैसे ब्रोकर्स में फीचर्स वगैरह होते हैं कि वो डिस्क्लोज क्वांटिटी वाला जो सिस्टम होता है, तो उसका इस चीज देखो, वो अगर आप ऑर्डर बुक देख रहे हो तो डिस्क्लोज क्वांटिटी दिखता है. ये लोगों पर इंटरेस्ट है, ये खड़े सौदे. तो ये इसमें वो वाला नेट दिखाना पड़ेगा, नॉन डिस्क्लोज होगा तब भी दिखाएगा. अगर आपका बिड एंड आस्क का कोई ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी है, हाँ, उसमें वो चैलेंजिंग बच सकता है. बट देन ये ऑर्डर बुक से नहीं आ रहा, ये 100 आता है, ये एनएफटी से डायरेक्टली हम लोगों को मिल रहा है, तो इसमें वो वाला इशू नहीं है. परफेक्ट. एंड इसका जैसे इसका तो एक तो ये होगा कि हमारा ट्रेड जो हमने लिया है वो कब दिखना शुरू होगा, एंड इसको इसी मेथड से अगर हमें नेक्स्ट डे लेट्स से हम ट्रैक करते हैं और दूसरी साइड में रिवर्सल कहीं दिखाई देता है या कुछ दिखाई देता है, तो should we keep that? So because there was a reason for you to be in the trade, the reason is you have noted call activity. Right. So if you see the call activity is getting unwinding, there should not be a reason to continue the trade. Right. So आपको you came here for a reason. The reason is itself is not registered. Right. And this has to be done, I think, post market hours only, क्योंकि शाम को वो ये नौकरी पैसा लोगों की काफी अच्छा है. ये अच्छा देखो, there are mechanism where you can make this return the real market. Currently it is not available. If somebody come forward and make this available for the retailers, it will be really helping retailer people. Or even for the institution. So we make it because we need it. But then if you are a working professional, आप ऑफिस से घर आ जाओ, आराम से भाव कॉपी डाउनलोड करो और ये 10 सेकंड के अंदर बन जाता है. ठीक है. आपने मैं दिखाता हूँ आपको. भाव कॉपी आप गूगल करो, एनएससी भाव कॉपी डाउनलोड हो जाएगा. जैसे ये कल का भाव कॉपी भी डाउनलोडेड है. ठीक है. इसमें कुछ नहीं करना आपने. इंसर्ट कीवर्ड, सिंबल लगा दो यहाँ पे, ऑप्शन टाइप, और अपने को क्या चाहिए, OY NOY. तो नो, you know what, ये कॉल का ओपन इंटरेस्ट इज अ चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, पुट का ओपन इंटरेस्ट चेंज इन ओपन फ्यूचर पे. बस you got it. So all you have to do to download one more file, not size file, and divide this. Perfect. ठीक है. तो for a working professional, this is you can do it. I mean, you don't need a rocket science for this. Perfect.
Okay, remove this layer. So there are NLC lot size file. You download the lot size file and change this to lot size. Right. और वो काम हो जाएगा कुछ नहीं करना आपको. So it is doable. Someone come forward and say, you guys come forward and make this real time. I mean, it will be really helpful to a lot of it. Right. You खड़े हो रहे हैं साथ साथ ही पता चला. हाँ. So you get to practice in the real time. Awesome.